we can start this topic photochemistry. Today we can see the Joblinski diagram. ये जो डायग्राम है इसको क्या कहते हैं? जॉबलिन्स की डायग्राम कहते हैं. S0 is nothing but the ground state. S1, S2, S3. These are nothing but the singlet excited state. While T1, T2 and T3, these are nothing but the triplet excited state. S0 ये ground state है. S0, S1, S2, S3 and T1, T2, T3. These are nothing but the excited state. S1, S2, S3 ये है singlet excited state, while T1, T2, T3 these are nothing but the triplet excited state. तो स्टार्टिंग में जो मॉलिक्यूल रहेगा वो ग्राउंड स्टेट पे रहेगा. The molecule is present in the ground state. So on absorption of light photon, that is nothing but we can say h mu. The electron of that absorbing molecule, it may jumps from ground state S0 to excited state S1 or S2 or S3. ठीक है, depending upon the energy of the light photon absorbed. So we can get here the absorption spectrum. ये जो absorption बताया है वो इसीलिए बताया है कि we can say that on the absorption of light photon, the electron of the absorbing molecule जो ground state में है, it may jump from ground state S0 to S1 or S2 or S3 singlet excited states, depending upon energy of the light photon absorbed. For each singlet excited state S1, S2 and S3, there is a corresponding triplet excited state T1, T2 and T3. ठीक है, यानी कि S1 सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की करस्पॉन्डिंग क्या रहेगा? ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट T1. फॉर सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट S2, its corresponding triplet excited state T2. For singlet excited state S3, there is corresponding triplet excited state T3. So here we can say that for each singlet excited state S1, S2, S3, etc., there is a corresponding triplet excited state T1, T2 and T3. So a singlet excited state has higher energy than the corresponding triplet excited state. A singlet excited जो state रहेंगी उसकी एनर्जी हाई रहेंगी, उसकी एनर्जी ज्यादा रहेंगी than the corresponding triplet state. Suppose S1 है तो S1 is having higher energy than T1, S2 is having higher energy than T2, S3 is having higher energy than T3. Understand? So we can say that initially what happens, suppose A is a molecule, A0 is a molecule, so it is present in the ground state. Understand? So on absorption of that light photon, यानी कि h mu जो अपन कहते हैं light photons, वो absorb करने के बाद में क्या होता है? The electron of that absorbing molecule, they may jump from ground state to excited state. तो यहाँ पर जो excited state में जो molecule गया है, we can show by a star, उसका अपन a star से बताते हैं, that is but the excited molecule. तो ये जो S1, S2 या S3 कहीं पर भी ये excited जो molecule रहेगा, we can say that activated molecule. So this activated molecule, it may come to the ground state by dissipating its energy through the various steps, या through the process. अब ये यहाँ पर जो molecule गया है या S2 या S1 जहाँ पर भी molecules excited जो molecules जम किया है तो वो नीचे आता है. Understand? तो ये here are the two steps, दो steps इसमें रहते हैं. एक जो स्टेप है इट इज नथिंग बट द नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस. नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस यानी कि उसमें कोई भी रेडिएशन इमिट नहीं होते हैं. अंडरस्टैंड? वी कैन से दैट रेडिएशन लेस. ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इन नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस? These transitions involve the return of activated molecules from higher excited state S3 to S2 or S2 to S1 or T3 to T2 or T2 to T1, or it may be from
S3 to T3, S2 T2, S1 T1, ये जो ट्रांजिशन है इसको कहते हैं नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस, यानी कि इसमें कोई भी रेडिएशन इमिट नहीं होते हैं, इसलिए इसको रेडिएशन लेस ट्रांजिशन भी कहा जाता है. So these transitions do not involve the emission of any radiations and thus referred as non-radiative or radiationless transitions. So the energy of that activity molecule, it can dissipated in the form of heat through the molecular collision, and this process is called internal conversion. ये जो प्रोसेस इसको अपन कहते हैं इंटरनल कन्वर्जन, आईसी, इंटरनल कन्वर्जन, यानी कि मॉलिक्यूल भी एक्साइटेड जो मॉलिक्यूल है इट कैन कम फ्रॉम S3 to S2 और S2 to S1 और T3 to T2 और T2 to T1. This process is called internal conversion. It is shown by IC, and this process occurs in less than about, we can say that 10 raised to minus 11 second. यानी कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत फास्ट प्रोसेस रहती है. We can say that we can require here 10 raised to minus 11 second और लेस, उससे भी कम टाइम में ये इंटरनल जो कन्वर्जन है वो प्रोसेस होती है. We can say that the molecule may also lose energy by another process. और एक जो दूसरी प्रोसेस जिससे मॉलिक्यूल एनर्जी लूज कर सकता है तो वो जो है we can say that ISC, it is nothing but the inter system crossing. ये ISC जो है इसको कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, यानी कि ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कैसी प्रोसेस होती है, फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट S3 to T3, S2 to T2, S1 to T1. This is nothing but the inter system crossing. This process involves transition between states of different spin. This process involves the transition between states of different spin. ये S3 है, ये T3 है. Understand? And different multiplicity from S3 to T3, S2 to T2, S1 to T1. ये जो प्रोसेस है इसको कहने का इंटर सिस्टम क्रॉसिंग. इट इज बट इंटर सिस्टम क्रॉसिंग. तो ये जो दोनों भी जो प्रोसेस है इसमें मॉलिक्यूल एनर्जी लूज करता है, अंडरस्टैंड, बट देयर इज नो इमिशन ऑफ एनी रेडिएशंस. मॉलिक्यूल एनर्जी लूज करेगा लेकिन कोई भी रेडिएशन इमिट नहीं होते हैं, इसलिए ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, नॉन रेडिएक्टिव और रेडिएशन लेस प्रोसेस. अब दूसरी जो ट्रांजिशन है वो रहता है रेडिएक्टिव ट्रांजिशंस, यानी कि जिसमें रेडिएशन इमिट होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रेडिएक्टिव ट्रांजिशंस. तो जनरली दीज ट्रांजिशंस इन्वॉल्व द रिटर्न ऑफ दैट एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल. अब एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल यहाँ पर आया है या फिर T1 पर आया है, तो व्हाट हैपेंस हियर in this process, the transition involves return of the activated molecules from singlet excited state S1 to ground state S0 or triplet excited state T1 to ground state S0, and such transitions are accompanied by the emission of radiation. ये जो दो transitions है S1 to S0 या फिर T1 to S0, ये प्रोसेस में क्या होता है, रेडिएशन इमिट होता है. So we can say that the emission of radiations from excited state S1 to ground state S0 is allotted transitions, and it occurs in about 10 raised to minus 8 seconds. And in this process, the emission of radiation is take place, and that's why this process is called as the fluorescence. Understand? ये जो process है इसको क्या कहते हैं, fluorescence ऐसा कहते हैं. The emission of radiations from excited state S1 to ground state S0 is called fluorescence. Understand? समझ में आया क्या? That fluorescence यानी कि क्या रहता है, तो the emission of radiations from excited state S1 to ground state S0 is called fluorescence. ये प्रोसेस में रेडिएशन क्या होते हैं, इमिट होते हैं. एंड दिस प्रोसेस, ये जो फ्लोरोसेंस प्रोसेस है, इट ऑकर्स इन अबाउट 10 raised to minus 8 सेकंड. ये प्रोसेस होने के लिए खाली 10 raised to minus 8 सेकंड जो है ड्यूरेशन उतना ही लगता है. और सेकंड जो रेडिएक्टिव ट्रांजिशंस है वो है फॉस्फोरेसेंस. Here what happens, the emission of radiations from
triplet excited state T1 from triplet excited state T1 to ground state is 0 is called phosphorescence. The emission of radiations from triplet excited state T1 to ground state S0 is called phosphorescence. And this process occurs in about 10 raised to minus 3 seconds. So this process is slow as compared to the fluorescence. Phosphorescence जो process है कैसे ये थोड़ी slow है as compared to the fluorescence process. क्योंकि phosphorescence जो process है it take place or it occurs in about 10 raised to minus 8 seconds, while uh, phosphorescence process it occurs about 10 raised to minus 3 seconds. The fluorescence is a fast process because it occurs in about 10 raised to minus 8 seconds, while phosphorescence it occurs in about 10 raised to minus 3 seconds. So here we can say that this process is the slow process. Phosphorescence is the slow process. Understand this about that Jablonski diagram. ये Jablonski diagram के बारे में Jablonski ये साइंटिस्ट का नाम है. अंडरस्टैंड दिस Jablonski diagram. अब इसमें ये जो एक आपको कंप्लीट क्वेश्चन आता है, दे कैन आस्क एक्सप्लेन Jablonski diagram. तो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम ड्रॉ करना है. और इसमें दो जो प्रोसेस है, एक थी नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस और दूसरा जो है रेडिएटिव ट्रांजिशंस, वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ये तो जनरल पार्ट था यहाँ पर कि वी कैन ऑलरेडी से दैट ऑन द एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट फोटोन द इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑब्जर्विंग मॉलिक्यूल may jump from S0 to S1, S2 or S3 singlet excited state depending upon the energy of light photon absorbed. So for each singlet excited state, there is a corresponding triplet excited state. So we can say that singlet excited state has higher energy than corresponding triplet excited state. यानी कि S1 की एनर्जी ये T1 से ज़्यादा रहेंगी. The molecule whether in singlet excited state or triplet excited state is said to be activated molecule. इनकी excited state में जो molecule रहेगा वो कैसा रहता है? Activated molecule रहता है. देन उसमें दो प्रोसेस आपको बता दिए थे. एक जो थी बोथ आर दी रेडिएशन लेस ट्रांजिशंस और वी कैन से दैट नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस. वन इज नथिंग बट द इंटरनल कन्वर्जन आईसी. ठीक है, यानी कि इन दैट व्हाट हैपेंस देयर, यानी कि मॉलिक्यूल जो रहेगा वो S3 से S2 या S2 से S1 है ना, ये प्रोसेस में कोई भी रेडिएशन इमिट नहीं होते. या फिर ट्रिपलेट स्टेट T3 टू T2 और T2 टू T1. दिस इज नथिंग बट द IC, इंटरनल कन्वर्जन, एंड इट ऑकर्स इन लेस देन अबाउट 10 raised to minus 11 सेकेंड. उतने टाइम में होती है. और सेकंड जो मैंने आपको कहा था कि दैट इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ये इंटर सिस्टम जो क्रॉसिंग प्रोसेस है, तो ये लेकिन कैसी होती है? इंटर सिस्टम नाम है. S3 टू T3, S2 टू T2, S1 टू T1. ये भी प्रोसेस में मॉलिक्यूल खाली एनर्जी की जो मॉलिक्यूल की जो एनर्जी रहेगी वो खाली कम होती है, बट देयर इज नो इमिशन ऑफ रेडिएशंस. कोई भी रेडिएशन इसमें क्या होते हैं? इमिट नहीं होते हैं. तो दिस ट्रांजिशंस आर आल्सो कॉल्ड नॉन रेडिएटिव और रेडिएशन लेस transitions. Okay. Then that fluorescence जो था वो उसमें था कि that the emission of radiations जो रहेंगे from singlet excited state S1 to ground state S0 is called fluorescence, and this process is occurs in about 10 raised to minus 8 seconds. और दूसरा जो था वो फॉस्फोरेसेंस था, यानी कि द ट्रांजिशंस फ्रॉम ट्रिपलेट एक्साइटेड T1 टू ग्राउंड स्टेट S0 is slow since it is a forbidden transitions and it occurs in about 10 raised to minus 3 seconds. So the emission of radiations from triplet state T1 to ground state S0 is called phosphorescence process. ये 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा इस पर. एक्सप्लेन Jablonski diagram. तो आपको इतना you have to draw the diagram and give the explanation of both these point, non-radiative transitions and radiative transitions. Then we can see the fluorescence.
फ्लोरोसेंस जो प्रोसेस है वो क्या रहती है? तो दिस स्टेट इज नथिंग बट द ग्राउंड स्टेट। ये जो स्टेट है ग्राउंड स्टेट है। दिस इज नथिंग बट द एक्साइटेड स्टेट। तो जैसे मैंने आपको कहा कि दैट वी कैन से दैट मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट। मॉलिक्यूल पहले कहाँ रहता है? ग्राउंड स्टेट में रहता है। तो दैट ऑन absorption of light photon, the electron of that absorbing molecule, it may jump from ground state S0 to excited state। मॉलिक्यूल पहले ग्राउंड स्टेट में रहेगा और जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, लाइट फोटोन एब्जॉर्ब करता है, तो इट मे जंप फ्रॉम ground state to excited state। Actually, what happens in that fluorescence process? So the emission of radiations, from excited state S1 to ground state S0 is called fluorescence, and it occurs in about 10 raised to minus 8 seconds। Understand? तो ये जो प्रोसेस इसका अपन क्या कहते हैं? फ्लोरोसेंस ऐसा कहते हैं। The emission of radiation from excited state S1 to ground state S0 is called fluorescence, and it occurs in about 10 raised to minus 8 seconds। इसकी और एक डेफिनेशन है। हाँ, ये फर्स्ट when a molecule absorbs light radiation, it is excited to higher energy states, then it emits excess energy through several transitions to ground state। The emission of radiations from excited state S1 to ground state S0 is called fluorescence। Or second definition, certain molecules or atoms, when exposed to light radiations of short wavelength, or we can say that high frequency, then what happens? Emits light of longer wavelength। This process is called fluorescence। ये जो प्रोसेस है इसको भी क्या कहते हैं? फ्लोरोसेंस ऐसा कहते हैं। सर्टन मॉलिक्यूल्स और एटम when exposed to light radiations of short wavelength or high frequency emits light of longer wavelength। The process is called fluorescence। And the substance that exhibits fluorescence, जो फ्लोरोसेंस फिनोमिनॉन बताता है, ठीक है, that substance is called fluorescent substance। For example, a solution of chlorophyll in ether, it can shows blood red fluorescence। A solution of chlorophyll in ether shows blood red fluorescence is the example of fluorescence। तो ये फ्लोरोसेंस पर क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स के लिए आता है। एक्सप्लेन फ्लोरोसेंस फॉर 5 मार्क्स। देन सेकंड जो प्रोसेस है वो है फॉस्फोरेसेंस। सेकंड इज नथिंग बट द फॉस्फोरेसेंस प्रोसेस। So here is also what happens. This S0 is nothing but the ground state, S1 is nothing but the excited state, T1 is nothing but the triplet state, and this ISC inter-system crossing। तो स्टार्टिंग में मॉलिक्यूल कहाँ रहेगा? ग्राउंड स्टेट में रहता है। The molecule is present in ground state। So when a molecule absorbs light radiation, it is excited to higher state। देखिए जब मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में रहेगा, जब वो लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, लाइट फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, देन व्हाट हैपेंस? इट कैन गोज फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। दिस इज मैथमेटिक S1। देन व्हाट हैपेंस? अब एक्साइटेड स्टेट S1 में जो मॉलिक्यूल रहेगा, he can goes from excited state S1 to triplet state T1 without emission of any radiation। This ISC जो process है, in this process there is no emission of radiation। Inter-system crossing, ISC यानी कि क्या रहता है? Inter-system crossing। In this process there is no emission of radiation। The molecule, the activated molecule, it may go from S1 to T1, ठीक है, without emission of radiations, but he can lose the energy। So the emission of radiation from triplet excited state T1 to ground state S0 is called phosphorescence। The emission of radiations from triplet excited state T1 to ground state S0 is called phosphorescence, and this process occurs in about 10 raised to minus 3 seconds। और ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होने के लिए 10 raised to minus 3 सेकेंड इतना टाइम लगता है। इसकी और एक जो डेफिनेशन है, we can say that when a substance absorb when a substance absorb radiation of high frequency
of high frequency and emits light even after the incident radiation is cut off. Even after the incident radiation is cut off, the process is called phosphorescence. देखो, when a substance is present in the ground state, molecular substance ground state में रहेगा, तो when a substance absorb light radiations of high frequency and emits light even after the incident radiations cut off. Incident radiation cut off होने के बाद में भी ये क्या करते हैं, they can emit the radiation जो रहेंगे वो emit करते हैं. तो this process is called, ये जो process है इसको क्या कहते हैं, phosphorescence ऐसा कहते हैं. and the substance and the substance which shows phosphorescence phenomenon, जो substance ये जो phosphorescence phenomenon बताता है, यानी कि the emission of light radiations from triplet excited state T1 to ground state S0 is called phosphorescence. So the substance which shows phosphorescence phenomenon is called phosphorescent substance. So for example, fluorescein in boric acid, it can show phosphorescence in blue region में बता देता है वो, कैसे उसकी जो वेवलेंथ रहती है, it is nothing but 5700 एंगस्ट्रॉम. और दूसरा एग्जांपल है सम मिनरल्स, कुछ मिनरल जैसे रूबी वगैरह मिनरल्स है, दे कैन आल्सो शो द फॉस्फोरेसेंस फिनोमेनन. वो भी क्या करते हैं, ये फॉस्फोरेसेंस जो फिनोमेनन है वो बता देते हैं. दिस अबाउट दैट फॉस्फोरेसेंस, ये फॉस्फोरेसेंस के बारे में है. तो इस पर भी शॉर्ट नोट्स आती है, दे में आस्क एक्सप्लेन फॉस्फोरेसेंस, तो यू कैन ड्रॉ द डायग्राम एंड देन गिव द एक्सप्लेनेशन विथ एग्जांपल फॉर 5 मार्क्स. ठीक है. दिस कंप्लीट अबाउट द जाबुलंस्की डायग्राम. ये पूरा जो है जाबुलंस्की डायग्राम के बारे में है. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जाबुलंस्की डायग्राम पर. क्वेश्चन एक तो कैसा रहेगा, एक्सप्लेन जाबुलंस्की डायग्राम फॉर 10 मार्क्स. तो वहां पर आपको यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है. और इसमें के जो टू जो मेन प्रोसेस है, एक है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस, एक जो रहेंगी वो रहेंगी नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस. वो क्या रहेगा, आईसी इंटरनल कन्वर्जन और आईएससी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इसके बारे में आपको बताना है. और सेकंड जो प्रोसेस है वो है रेडिएटिव ट्रांजिशन, यानी कि जिसमें रेडिएशन इमिट होता है. वो दो प्रोसेस कौन से है, एक है फ्लोरोसेंस और दूसरी है फॉस्फोरेसेंस. फ्लोरोसेंस यानी कि क्या रहता है, द इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट S1 to ground state S0 is called fluorescence. It occurs in about 10⁻⁸ second. और दूसरी जो प्रोसेस है, the emission of radiations from triplet excited state T1 to ground state S0 is called phosphorescence. It occurs in about 10⁻³ second. It is for 10 marks. और शॉर्ट नोट्स के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो दे मे से दैट एक्सप्लेन फ्लोरोसेंस, तो यू कैन ड्रॉ द डायग्राम एंड गिव द एक्सप्लेनेशन. और फिर एक्सप्लेन फॉस्फोरेसेंस, डायग्राम ड्रॉ करना है और उसका एक्सप्लेनेशन देना है फॉर 5 मार्क्स के लिए. इफ एनी क्वेश्चन यू मे आस्क, अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो वो